गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर एस्पिरेंट्स। सभी अभ्यर्थीगण को मेरी ओर से शुभ संध्या। इट्स 7:30, 7:30 बज चुके हैं। अब आइए चले आज का ये विशेष प्रसारण हम प्रारंभ करें। Here comes question number 1 of the day. Dear aspirants, consider the following statements regarding United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF. This is abbreviated as HLPF, United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development. We have three statements in this MCQ. Mr. Alam, very good evening. Shaminder Singh ji, good evening. Okay, so the first statement, the establishment of HLPF was mandated in 2012 United Nations Conference on Sustainable Development. Okay, dear aspirants, the second statement, the forum meets annually under the auspices of UN Economic and Social Council. और क्या लिख रहे हैं, क्यूकिल मिल गई सर, साइकिल मिल गई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। कैलाश प्रसाद जी नमस्ते गुरु जी। तो the third statement, HLPF was a central role in the review of 2030 agenda for sustainable development and the sustainable development goals at the global level. So how many of the statements above each are correct? A, one only, B, two only, C, all three, and D, none. So dear aspirants, कैलाश प्रसाद जी, यस ठीक है, आपका नमस्ते हो गया है। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, डियर एस्पिरेंट्स, आपको बताना है गुरप्रीत सिंह। ओहो, हाउ आर यू मिस्टर गुरप्रीत? सो आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम यू आर हियर विथ मी। काफी दिनों के बाद आपको मैं देख पा रहा हूं, तो आप कैसे हैं बताएं। So the answer to this MCQ is C, that is all three. Dear aspirants, high level political forum relates to 2025 under the auspices of ECOSOC, ECO, SOC, ECO, SOC. It was held from July the 14th up to 23rd of July 2025 in New York. So high-level political forum, the establishment of the United Nations High-Level Political Forum on Sustainable Development was mandated in 2012 by the outcome document of United Nations Conference on Sustainable Development. Okay, so the future we want. परशुराम कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। और गुरप्रीत सिंह जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग जी। तो ये जी तो बिहार का टोन है, और तो इंडिया में कहीं भी जी बोला नहीं जाता। हाँ, एक स्कीम है गवर्नमेंट का, जी राम जी। ओके, मनरेगा की जो योजना थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, तो उसका नया नाम हो गया, बल्कि उसको रिप्लेस करके, और मिस्टर समिंदर सिंह जी इज राइटिंग पंजाब में, सो दिस इज करेक्ट। So dear aspirants, now all the statements are correct. से हूं मैं तो सर, यस, वेरी गुड वेरी गुड। और वहां पे आपके यहाँ एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट में पंजाब, मिस्टर राज मल्होत्रा। राज मल्होत्रा के को आप अगर जानते होंगे, तो वहां पे वो कोचिंग चलाते हैं, यूपीएससी के कोचिंग, एंड ही इज अ वेरी नाइस पर्सन एज वेल। काफी अच्छे हैं वो, प्रोफेशनल नहीं है जैसे और लोग हैं प्रोफेशनल, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि वो काफी ग्राउंड टू अर्थ रियलिटी वाले हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, आइए चलें अब एक और प्रश्न की ओर हम आपको ले चलेंगे।
और यहाँ पे वो प्रश्न है पंजाब में। यस डियर एस्पिरेंट्स, तो काफी कुछ इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है और उस तैयारी में कैसे आप अपने तथ्यों को और जो जो कुछ भी रिक्वायरमेंट्स है यूपीएससी का, मतलब आपकी पकड़ होनी चाहिए सिलेबस पे, पीवाई क्यूज पे अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो ये सब मायने रखता है डियर एस्पिरेंट्स कि आपकी तैयारी कैसी है। तो यस, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन को हम देखने के पूर्व आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि यूपीएससी कंसिस्टेंसी चाहता है, इट नीड्स योर कंसिस्टेंट एफर्ट। और मेहनत तो इसमें है अनडाउटेडली, लेकिन कंसिस्टेंसी जब आप मेंटेन करते हैं तो सफलता आपका कदम चूमती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यस, इस बार का जो रिजल्ट हुआ उसमें अनुज अग्निहोत्री को टॉपर ठहराया गया और मिस राजेश्वरी वो रैंक 2 AIR ओके 02 उनको मिला। और इसी तरह से आपने देखा कि बाकी टॉप 10 में, और सबसे बड़ी बात है मेंस में उन्हें 867 मार्क्स आया, ओनली 867 मार्क्स। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितना अब ये अ, बिल्कुल जहां परसेंटेज का सवाल है तो वो परसेंटेज अब बिल्कुल ही नीचे जा रहा है, 52%। यस, 52%। सो यू कैन इमेजिन योर सेल्फ कि परसेंटेज कितना। और शक्ति दुबे जी का ओवरऑल जो परसेंटेज था वो इसी के आसपास था, 52 यू में से काफी नीचे का वो परसेंटेज था। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देखें। और यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन discretion to parliament to modify the composition of a legislative council in the state legislature। आप जानते हैं भारत में 28 स्टेट्स हैं, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जहां तक सवाल है केवल 6 स्टेट्स में है, बाकी स्टेट्स में केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन डिस्क्रेशन टू पार्लियामेंट to modify the composition of legislative council in the state legislature. Second, number of members of legislative council vary from state to state. Or third, 1/3 of the members of legislative council are elected by the members of legislative assembly of the state. So which of the statement is are correct? A 1 2 only, B 2 only, C 2 3 only and D 1 2 3। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। सो डियर एस्पिरेंट्स, इफ यू आर नोइंग द आंसर आप इसका उत्तर बता सकते हैं। और इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद दिस क्वेश्चन तो फिर आप इसका आंसर नहीं बता सकते हैं। सो डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले कम से कम हम देखें कि इसका आंसर क्या होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, डियर एस्पिरेंट्स, इसका उत्तर यस, the answer to this question is
Yes. 1, 2, and 3. So, first statement is correct. Yes, Parliament can modify. Second statement, when Constitution says the total number of members in the Legislative Council of a state having such a council shall not exceed one third of the total number of members in the Legislative Assembly of that state. It means seats will vary from state to state. So this is 171. Article 171 of the Constitution, composition of Legislative Council. Composition of Legislative Council. The third statement is also correct, and you should know this question's importance. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को आपके लिए चुन करके लाया. एक बार फिर से ध्यान देंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन discretion to parliament to modify the composition of legislative council in the state legislature. Second statement, number of members of legislative council vary from state to state. And number 3, one third of members of the legislative council are elected by the members of legislative assembly of the state. So which of the above statements is are correct? So our answer should be बीकी सिंह जी आ गए तो आपको भी गुड इवनिंग बीकी जी. सो आवर आंसर शुड बी डी 1, 2 एंड 3. इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. और गुरप्रीत जी, आई एम ऑल्सो फ्रॉम पंजाब. ओहो बीकी सिंह जी, सत श्री अकाल, वाहे गुरु. बड़ा अच्छा लगा. तो ये मैं जानता नहीं था मिस्टर बीकी सिंह, और अभी तो बिल्कुल. आइए, विथ रेफरेंस टू द recent development in energy storage by Indian scientists, consider the following statement regarding porous graphene carbon nanocomposite PGCN. So, Sat Sri Akal sir ji, Vaheguru. So, Vaheguru खालसा. और फिर जो बोले सो निहाल. यस, इफ आई एम करेक्ट, जो बोले सो निहाल. बहुत जरूरी है. तो आइए चले इस क्वेश्चन पे. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा. और वाहे गुरु के खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह. या फतेह, बड़ा पवित्र लगा. यस, बिल्कुल बिल्कुल. With reference to, please concentrate, with reference to the recent development in energy storage, वाहे गुरु जी की फतेह. yes. और by Indian scientists, consider the following statements regarding porous graphene carbon nanocomposite. Statement 1, the newly developed PGCN allows supercapacitors to operate at a high voltage significantly exceeding the conventional limit. Statement 2, the PGCN electrode surface is engineered to be super hydrophobic to repel moisture and super organophilic to facilitate rapid ion transport from organic electrolytes. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Dear aspirants, A, both the statements are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1. And I should say that this is the correct answer. Okay, both the statements are correct. Newly developed PGCN allows supercapacitors to operate at a high voltage significantly exceeding the conventional limit. And what is statement 2?
The PGCN electrode surface is engineered to be super hydrophobic, to repel moisture, and super organophilic, to facilitate rapid ion transport from organic electrolytes. So this is the correct answer. Dear aspirants, with reference to the commercial space industry, try to catch my words. Commercial space industry, consider the following statements. Statement 1. The use of reusable rocket technology has significantly reduced the cost of sending payloads into space compared to rockets that are used only once. Statement 2. Reusable rockets completely overcome the limitation imposed by the rocket equation by removing the need for multiple stages. Which of which one of the following is correct? A. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation of statement 1, but my answer is statement 1 is correct, but statement 2 is not correct. Okay, now, you might have gone through the article published in the newspaper regarding reusability can lead to sustainable, cost effective access to space. Dear aspirants, while you will appear to the mains examination, such terminology words will help you. Statement 2 is incorrect because reusable rockets do not escape the basic laws of physics. The rocket equation simply means this. To go to a space, a rocket must keep getting lighter as it goes up. That is why rockets drop empty fuel tanks and stages on the way up. This is called staging. It helps the rocket lose useless weight and gain enough speed to reach orbit. Reusable rockets do not change this rule. Even modern rockets like Falcon 9 or Starship still use staging. The only difference is that some stages are brought back and reused later. I hope you have understood this question. Dear aspirants, now let us come to understand this very question. Okay, sir, how is your health now? Yes, you are looking at me. I am to great extent fine. बहुत ठीक हो गया हूं अब, और कोई बात नहीं है, ये सीजनल है। और समिंदर सिंह जी से सुबह में काफी बात हुई। कैलाश जी हेल्प नहीं कर रहे हैं, अगर कैलाश जी हेल्प करें तो मैं हमेशा अच्छा रहूंगा। तो क्या हेल्प करना है ये तो बोलना ठीक नहीं है। आइए चले हम लोग अपनी तैयारी को अगले चरण पे ओके पहुंचाए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, सोलर photovoltaics are considered a more land efficient method of energy production for transport compared to liquid biofuels. Or statement 2, solar panels convert a significantly higher percentage of incident sunlight into usable energy than the photosynthetic process in fuel crops. Select the correct code. Dear aspirants, A is both the statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Sakshi is joining us and she is telling good evening, very good evening Sakshi. और आइए चले, ये जो भी मैं आज प्रश्न पढ़ रहा हूं वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आप उनको देखेंगे। Dear aspirants, now I am going to repeat it. Consider the following statements. Statement 1, solar photovoltaics are
considered a more land efficient method of energy production for transport compared to liquid biofuels. Statement 2 is solar panels convert a significantly higher percentage of incident sunlight into usable energy than the photosynthetic process of fuel crops. So, dear aspirants, both the statements are correct, and statement 2 is the correct explanation of correct explanation for statement 1. So, this should be my answer. Solar panels yield far more energy per acre than biofuels. This was the header published in the newspaper The Hindu. तो वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया. सोलर सोलर पैनल्स यील्ड फार मोर एनर्जी पर एकड़ देन बायोफ्यूल्स. सो डियर एस्पिरेंट्स, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना. द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन these two energy sources lies in their conversion efficiency. Photosynthesis, biofuels. This is a biological process optimized by evolution for plant survival, not for high energy density fuel production. Plants generally convert only about 0.1% to 1% of the solar energy they receive into biomass. Photovoltaics, that is solar, this is a technological process designed specifically for energy capture. Standard commercial silicon panels operate at 15% to 20% efficiency. So, dear aspirants, these statements are very very important और आप इस पर क्वेश्चन निश्चित रूप से पा सकते हैं. The approved list of models and manufacturers is most closely associated with which of the following? Okay. A. Ministry of Power, Grid Regulation. B. Ministry of Commerce, Import Licensing. Ministry of New and Renewable Energy, Solar Sector Quality Control. And D. Niti Aayog, Long Term Energy Planning. So, dear aspirants, as far as approved list of models and manufacturers is concerned, okay, C is the answer. Ministry of New and Renewable Energy. This is the answer. Now let us see this question. Regarding India's official microbial designations, consider the following statements. Number 1. Now it is Keralam, not Kerala. Keralam is the first state in India to designate a state bacterium. A state bacterium. Second, India currently does not have a designated national microbe. Which of the following statement is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, and D, neither 1 nor 2. So, dear aspirants, of course, our answer is A. Our answer is A. Only first statement is correct. Keralam has indeed moved to become the first state with designated bacterium, but statement 2 is incorrect because Lactobacillus bulgaricus was announced as the national microbe in 2012. This question is very, very tricky and you should note it down. Now, let us come to understand this very question. With respect to Network Planning Group, NPG, formed under PM Gati Shakti National Master Plan, consider the following statements. विकी सिंह जी कह रहे हैं सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं. लाइक कभी कभी लगता है कि दोनों स्टेटमेंट सही रीजन एक्सप्लेन करते हैं. सर इसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें? वेरी गुड क्वेश्चन. एंड specifically my take is that if you have studied the topic in depth, undoubtedly, okay,
There is no space for confusion. You will go for the correct option. This is my advice. So, first of all, you should categorically, okay, note down the important topics in every field: polity, economy, history, geography, okay, science and tech. In all respects, you should prepare your notes. Dear aspirants, Network Planning Group NPG formed under PM Gati Shakti National Master Plan. This was very much in the newspaper. Number one, it constituted for monitoring the master plan and for approving any change in the master plan to meet any emerging requirements. Second statement, it is chaired by Cabinet Secretary. Now you have to find out the correct answer, whether this is chaired by Cabinet Secretary. Third statement, it will guide all the departments, ministries responsible for creation of economic zones and connectivity infrastructure during the planning phase itself. So, which of the above statements is are correct? A 1 2 only, B 2 3 only, C 1 3 only, and D 3 only. Dear aspirants, what is the institutional structure of PM Gati Shakti National Master Plan? So, if you are knowing the institutional framework for rolling out, implementation, monitoring, and support mechanism is designed to have a three-tier system. First, empowered group of secretaries. Second, network planning group. And third, technical support unit. So, our answer is D, third statement only. तो इस प्रश्न को भी आप निश्चित रूप से देखेंगे. Let us come to understand the next question. The Panchayati Raj institutions in India strengthen. Select the correct code. A. Procedural democracy. B. Representative democracy. C. Participative democracy. And D. Consensus democracy. अब ये क्वेश्चन तो बिना आंसर लिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे. प्लीज आंसर. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग पंचायती राज. और परशुराम जी ने सी आंसर दिया एंड दिस इज थम्स अप फॉर योर करेक्ट आंसर. पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, भागीदारी वाला प्रजातंत्र. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया स्ट्रेंथन, मजबूत करते हैं, सुदृढ़ करते हैं. किसको? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को. और सी इज द करेक्ट 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 आंसर. डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले एक और क्वेश्चन लेते हैं यहां पे. और यह है, कंसीडर द फॉलोइंग. नंबर 1, स्वीडन. थोड़ा मिस्टर आलम के लिए भी तो कुछ चाहिए. नंबर 2, नॉर्वे. नंबर 3, एस्टोनिया. नंबर 4, फिनलैंड. Which of the above countries form border with Baltic Sea? A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 3 4 and D 1 2 3 4. अब इसका आंसर आपने देना है. व्हाट शुड बी योर आंसर? बताइए. Yes. So, Sweden, Estonia, and Finland. Okay. C is the answer.
इसका आंसर क्या होगा? स्वीडन, एस्टोनिया एंड फिनलैंड। 1, 3, 4। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा? सी। तो इस तरह से मैप रिलेटेड क्वेश्चन पे कमेंट कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सिल्फिस, SIL, PHS, स्थपति, STHAPATI, सुइरग्रहीन और वर्धकीन इन एंशियंट इंडिया वेयर। अब ये क्या थे? ए, मेंटेन्स फाइनेंस इन मुगल एम्पायर एट डिफरेंट स्टेजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बी, बिल्डर्स ऑफ टेम्पल। सी, priest assigned for different tasks under Krishnadev Rai. And D, officers at local administration under Gupta Empire. So what should be the answer? Silpis, Asthapati, Soirangrahin or Vardhakin? Dear aspirants, B is the answer. Builders of temples. तो इसको आप नोट कर लेना है। बिल्डर्स ऑफ टेम्पल्स इज द करेक्ट आंसर। और इस प्रकार से आपने देखा कैसे कैसे प्रश्नों पर हम आपका अभ्यास कराते हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्व के विषय होते हैं। और इसीलिए डियर एस्पिरेंट्स, आइए चले एक क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, इस पर एक सवाल लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस क्वेश्चन से यस डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। नंबर 1, द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन was set up as a statutory body under the National Minorities Commission Act 1992. Second, the chairperson and all members of commission are appointed by the committee headed by secretary to the Ministry of Women and Child Welfare, Child Development. Third, the commission must include at least one member each from scheduled caste and scheduled tribe. So how many of the above statements are correct? Dear aspirants, A1 only, B only 2, C all 3, and D none. The National Commission for Women was set up as a statutory body in January 1992 under the National Commission for Women Act 1990 to review the constitutional and legal safeguards for women, recommended remedial redressal. तो इसमें हमारा आंसर केवल एक स्टेटमेंट सही होगा। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। डियर एस्पिरेंट्स, आइए देखें एक और टैरिफ पर सवाल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल। ट्रंप का टैरिफ और ईयू से जो हमारी समझौता हुई, और फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कुछ हुआ, ये सारे हॉट केक हैं। Which of the following EU regulations are considered significant non-tariff barriers (NTB) that Indian exporters must comply with despite the tariff eliminations in the FTA? Number 1, Carbon Border Adjustment Mechanism. Number 2, EU Deforestation Regulation. Number 3, Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Dear aspirants, so the answer is A1 only,
B 1 2, C 2 3, and D 1 2 3. Our answer should be D 1 2 and 3. तो ये हमारा आंसर है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें बिल्कुल सही है। तो आइए चले आज का आखिरी सवाल, द कंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर वन, क्लॉज 5 into Article 15 of Constitution was inserted by 93rd Constitutional Amendment 2005. Second, Article 15(5) explicitly excludes minority educational institutions referred to in Article 30 bracketed 1. Third statement, Article 15 bracketed 5 is specifically aimed at school education and higher education both. How many of the above statements are correct? A only one, B only two, C all three, and D none. So dear aspirants, यहां पे दो ही स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट गलत है। सो लेट अस हैव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। 93rd Constitutional Amendment Act came in 2005 and it added clause 5. So Article 15 bracketed 5 was added. The government passed the Central Educational Institutions Reservation and Admission Act 2006, providing 27% reservation for OBC. Supreme Court in the Ashok Kumar Thakur versus Union of India case upheld the validity of both. बीडीए अच्छा लगा आज का क्लास, और बड़ा अच्छा लगा आज का क्लास। और भी क्वेश्चंस आप सुनाते, बट कल सुनाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्लास आपको आगे भी मिलेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, चूंकि यूपीएससी का नर्व्स जिसने पकड़ लिया वही आपको कंपीट करा सकता है। मैं तो हमेशा कहता हूं, नदी वही पार कराएगा जिसने खुद नदी पार किया है। ओके, अजनबी टीचर्स बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो क्या आपको पार कराएंगे, जिन्होंने खुद भी। तो आइए देखें, आर्टिकल 15 ब्रैकेटेड 5 contains a specific proviso or exception. It explicitly states that these special provisions shall not apply to minority educational institutions referred to in Article 30 bracketed 1. So our answer should be only, dear aspirants, two statements are correct. So B is the answer. तो आज यहीं पे आप हमको इजाजत दीजिए। कल थोड़ा और थ्रोट मेरा ठीक हो जाएगा तो कल और अच्छे से हम लोग क्लास कर पाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत कोटि कोटि, ओके, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्या थैंक्स। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। लेट मी से गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।